Okay, good morning class. We'll start in next 1 minute. Okay, let's begin. So last lecture, we had just started with tax. What is tax? What are the different types of tax? So we'll continue that. So एक था अपना, we discussed what is tax. We discussed what is direct and indirect taxes, types of direct tax, types of indirect tax, then the features of indirect tax, disadvantages or demerits of indirect tax. We discussed what is GST. So up till here, disadvantages or demerits of indirect taxes. Now it can be asked as a short note question when it is a theory exam. Otherwise, these are all objectives. So next is what is GST. Now in this I highlighted two things जो objectives के लिए बहुत important है. So one is GST is a one nation one tax, and it is
एप्लीकेबल और केम इनटू इफेक्ट सिंस 1 जुलाई 2017. तो ये दो चीज है जो याद रहना चाहिए. ओके, देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया. वो लास्ट टाइम बताने का रह गया था, आई डिड नॉट शो इट. ओके, सो इसको फटाफट देख लेते. सो वी कैनॉट से दैट और वी कैनॉट क्लेम दैट इट वाज an idea of the recent government, मतलब जो current government जो चल रहा है. It is there since 2000. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, he had set up a committee during that time. तो बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि अभी आ गया तो चलो. So it is there in planning since 2000. So at that point BJP run government was there. Then 2004 में again it was, I think BJP government was there, which was to be taken over by the Congress government. Then 2006 में the finance minister proposed GST. So this was during the Congress regime. 2007, 2008 to 2011 to 2013 was the Congress regime. यहाँ पर देख लो, slowly and steadily they said introduce करना है, but it got postponed. Then next 2014-15 में BJP run government came. So उनका अलग था. So they introduced GST, they passed the bill. 16 में GST network went online. Then finally in 2017 GST was passed and implemented on 1st July 2017. A historical event. अभी यहाँ पर देख लो, two governments are involved at two different places. BJP Congress BJP या BJP run या BJP alliance, Congress run Congress alliance, and then BJP run या BJP alliance. तो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे टाइम पे हुआ है. ऑब्वियसली हुआ है, बट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज it is not a one person's game, or it is not about one government's game. It is the entire government. Past history है, so we can go behind it. अभी एग्जाम में ये पूरा पूछेंगे नहीं, but still it was important to discuss. So तुम लोग के पास एक जस्टिफाइड आंसर रहना चाहिए. अगर कल कोई बोलेगा तो गलती से किसी ने पूछ लिया इंटरव्यू में तो पता रहना चाहिए. Okay, then we had discussed about GST in GST identification number. Now there is one thing I would like to share. ये last time मेरा बताने का रहेगा था. So how do you identify your number format? एक website है GST Zen करके. So you will get different details about GST. So now this is a private website. I will share it in the class group also. अभी शेयर कर देता, बाद में मैं भूल जाता. तो एक स्टूडेंट का बी डिवीजन में क्वेरी था, मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं. एंड देन वी फाउंड दिस आउट. तो जीएसटी, आई हैव शेयर्ड द वेबसाइट. So how do you identify GST number format? एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा तुम लोगों को, to be frank with you. So some of you have a business, or some of you may in future start a business. So this is how you identify. या तुम लोग ऐसे ही randomly घूमते रहते हो दुकान के सामने, अगर GST नंबर है तो पता चलेगा. अभी यहाँ पर देख लो. So there is a detail given. तो if you are registered as a normal business person or a composite, अभी composite देख लो. Manufacturers get composition scheme, traders get composition scheme, hoteliers get composition scheme. अभी ये क्या है मैं बाद में डिटेल में तुम लोग को आगे बताऊंगा. So and there is a casual taxable person. ये भी आगे definitions में आएगा, maybe during the end of this lecture or maybe in the next lecture. So हर GST का first 2 digits is your state code. So छत्तीसगढ़ का 22 है,
दिल्ली का 07 है, नीचे था किधर मैंने पढ़ा था. Okay, then you have a 10-digit PAN number. तो ये 4 कैटेगरीज के लिए सेम है, देखो पैन नंबर. देन 13 you have 1 to 9 or A to Z. 14 you have again a number or an alphabet A, B, E, J or Z. Generally there is Z by default. And then the last one is a checksum digit. तो आपका जो बिजनेस है या फिर आप जो भी कैटेगरीज में इसमें पढ़ते हो, अकॉर्डिंगली दैट जीएसटी नंबर वुड बी एप्लीकेबल टू यू, और दिस जीएसटी फॉर्मेट वुड बी एप्लीकेबल टू यू. सो अभी यहाँ पर देख लो. सो इफ यू वांट डिटेल्स अबाउट द स्टेट कोड, ऐसे वाले अभी देखो. तो वी आर इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का ही देखते हैं, चलो. तो महाराष्ट्र स्टेट कोड इज MH27. यहाँ पर देख लो अल्फा कोड एंड जीएसटी स्टेट कोड. ओके, सो वी कम, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. सो एंटिटी नंबर ऑफ द पैन. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन एनीवेयर. द चेक कोड baby an alphabet or a number. So इधर जो checksum digit है देखो लास्ट का, may be an alphabet or may be by. So अभी आगे जाते हैं. So we come to the topic again. So this is something I wanted to share with you. मैंने ये सेम लिंक क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया. If you want any information, you will get it there. We discuss what is the need for GST, then features, comprehensive है, multi-stage है, it is based on value addition and destination based. फिर हमने लास्ट लेक्चर में we discussed what is the components of GST. So there are 3 parts or 3 taxes. CGST, that is central GST. SGST, that is state GST. Then there is IGST called as integrated GST. इसमें और एक है, that is called as UT GST. So if you are registered or if you belong to a union territory, then it becomes UT GST. तो उतने डिफरेंस है. So we discussed it till here in the last lecture. I will discuss further. So ये हम लोग लास्ट में यहाँ पर रह गए थे. So in the old regime and in the new regime, what is the difference? Yeah, previous, before GST was there, and new regime when GST was introduced, क्या changes हुआ? If you can see the number of taxes that are there, old regime में VAT was there, central excise was there, service tax was there. अगर sale is within the state. But now in the new regime, most of the taxes are scrapped and there is only CGST and SGST. ये विद इन द स्टेट है, या विद इन महाराष्ट्र अगर मैं करता हूँ बाइंग एंड सेलिंग, या विद इन गुजरात करता हूँ, या जो भी स्टेट ले लो या यूनियन टेरिटरी ले लो, उसके लिए ये लॉजिक है. नाउ इफ यू आर सेलिंग टू एन अदर स्टेट और इफ यू आर ट्रांजैक्टिंग और सप्लाइंग टू एन अदर स्टेट, इन दैट केस IGST विल बी एप्लीकेबल. पहले क्या होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था प्लस एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स. So this is about old regime and new regime. अभी यहाँ पर देख लो ना, there is an example, although it is explained clearly, but मैं shortcut में बता देता हूँ. Suppose
गुजरात के डीलर ने पंजाब के डीलर को गुड्स बेचा 50,000 का and the tax rate is 18%. Now there are two states involved, Punjab and Gujarat. Now goods are going from Gujarat to Punjab. In such a case, interstate होगा ये, so IGST आएगा. Now the rate of tax will be 50,000 into 18%, which comes to 9,000. So ये जब भी interstate होगा या दो अलग अलग states या दो अलग अलग union territories involved है, तो ऐसा लॉजिक बनता है या ऐसा टैक्स कैलकुलेट होता है. नाउ सिंस दिस इज IGST, the amount or the revenue collected will go directly to the central government. Okay, now the next one is the same dealer. ये सपोज मेरा एग्जांपल ले लो. सपोज मैं गुजरात में रहता हूँ, मैंने पंजाब में गुड्स बेच दिया, 50,000 का गुड्स था, it was IGST. Now I am staying in Gujarat. I sell goods to suppose Mayur in Gujarat itself. So in this case, ये इंट्रा हो गया विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात. In such a case, CGST and SGST will be applicable. दोनों में डिफरेंस क्या है? IGST डायरेक्ट एप्लीकेबल है. CGST and SGST is divided into half of the rate of goods or the rate of tax. तो CGST कितना हो जाएगा? 12% का half, that is 6% of 50,000, and SGST will be 6% of 50,000, which comes to 3,000 each. So ये logic है. We will do this in detail when we do input tax credit and payment of tax. तो उसमें पूरा यही समझा है, किसने किसको गुड्स बेचा, कितने अमाउंट में बेचा, what is the rate of tax, whether it is from the same state और फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट. तो ये हम लोग बाद में करेंगे कैलकुलेट, मैं बाद में डिटेल में बताता हूँ व्हेन वी कम टू द चैप्टर डायरेक्टली. ओके, नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन द शॉर्ट नोट्स. टैक्स लॉस तो नहीं पूछेगा, इसके बाद का पूछेगा. सो दीज वर द टैक्स लॉस बिफोर GST. बहुत कुछ है ना, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड सम ऑफ दीज इन द लास्ट लेक्चर. सो आगे जाते हैं. नाउ this slide and this slide is important from short note point of view. So इसको पढ़ के ले लो. If your exams are offline, but if your exams are online, then in such a case, this topic and this topic, the next wala, state taxes and central taxes, may be asked as which of these is a state tax subsumed. तो चार सेंट्रल रहेंगे, मतलब तीन सेंट्रल रहेंगे, एक स्टेट रहेगा. और इट कैन बी ऑपोजिट, विच ऑफ दिस is a central tax गूगल पे तो आया था, अभी पता नहीं, गूगल पे बहुत न्यूज आता है. बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज कोरोना तो है ही. नाउ वेरी रिसेंटली बर्ड फ्लू चालू हो गया, चिकन का रेट्स गिर गया, पता है, कल ही मैंने देखा. सो चिकन विच यूज्ड टू कॉस्ट 180 रुपीज पर केजी इज नाउ कॉस्टिंग 110 रुपीज पर केजी. अभी ये वीक में और भी गिरेगा, देखो प्राइस. मैं कल 110 में खरीदा, तो 130 क्या बोल रहा, तेरे से ज्यादा लिया होगा. ओके, नाउ
And this is what I was speaking to Abhishek Gupta, और किसी को कुछ नहीं बोल रहा. Okay, so practicals के लिए उन्होंने बोला था क्या? They will call in the colleges in this semester also, मतलब जो अभी खत्म हुआ, बट बुलाया नहीं किसी को, भी पता नहीं क्या किया उन्होंने. Now one of my friends wife is teaching in a medical college, so in that case she has to go to the hospital. तो जो भी उधर काम है, मतलब जो प्रैक्टिकल्स है वो ऑनलाइन बस सिखाते हो, मतलब डाइसेक्शन करना है या फिर कुछ ऑपरेट करना है, जो भी है. तो वो मेरा फ्रेंड बताते रहते कि बैंड बज गया, भले वर्क फ्रॉम होम बोला है, दे हैव टू रिपोर्ट देयर एंड शो द प्रैक्टिकल्स. नाउ सिमिलरली दोज हु आर इन साइंस स्ट्रीम्स, दे आल्सो हैव टू डू प्रैक्टिकल्स इन लैब्स. टीचर्स लोग जाके कॉलेज में कर रहे हैं, बट बाहर बच्चे लोग घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं. अभी आगे जाके क्या करेंगे ये लोग पता नहीं. सो मे बी श्वेता सेड गूगल पे तो आया है, वी ओनली हैव टू वेट, बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर ने ही बोला है, महाराष्ट्र का उदय सामंत, कि हम करेंगे 20 तारीख से चालू. बट लेट्स सी, नाउ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग. अभी जो बोलेगा तोहफा कबूल कर लेता, और क्या. सो नाउ वी कम टू द टॉपिक. सो if this is an offline paper, it comes in the short notes. If it is an online paper, then any of these could be asked. Which of these is a state tax subsumed? 20 जनवरी का बात हुआ है न्यूज में कि 20 जनवरी से इंट्रोड्यूस होगा, मतलब कॉलेज स्टार्ट करना है, अभी देखते हैं. सो नाउ वी कम टू द टॉपिक अगेन. सो वैट एंड सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो जनरली अभी पहले देखो केबल पे लगता था, इवेंट्स पे लगता था. देन लग्जरी टैक्स on luxury goods, taxes on lottery, betting and gambling, ये अभी भी है, मतलब डायरेक्ट टैक्स में है. then state cess and surcharges to the extent of supply of goods, and entry tax not in lieu of octroi. Then we come to central taxes. So central excise duty is removed, additional excise duty is removed, only applicable to certain goods which are not under GST. ये भी आगे देखेंगे हम लोग. So service tax. Then we have the next one, additional customs duty. Then we have special duty of customs. So in simple terms में याद रखना है, customs duty को तो निकाल दिया, तो वो एक रह गया अपना. सेल्स टैक्स को तो हटा दिया, तो वो भी निकल गया. सर्विस टैक्स को भी हटा दिया, तो वो भी निकल गया. सो बेस्ट वे टू रिमेम्बर दिस इज, सिंस जीएसटी इज कनेक्टेड विद गुड्स एंड सर्विसेज, तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गुड्स और सर्विसेज दोनों हटा दिया. थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ. देन एजुकेशन सेस एंड सरचार्जेस. ओके, टैक्सेस विच में नॉट बी सबस्यूम्ड. स्टैम्प ड्यूटी पहले भी था प्रॉपर्टी पे, अभी भी है. Vehicle tax is not subsumed. Electricity duty is not subsumed. Entertainment tax levied by local bodies, basics, customs and safeguard duties on import of goods. Okay, now general myths and facts is not important, ये मैंने extra डाला था. Okay, now there is one thing which is important. अभी यहाँ पर देख लो. I will highlight something. It will get asked in the objectives. अभी इधर यहाँ पर HSN code कुछ है. So in GST, almost the products have an HSN code, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. तो कोई भी रैंडम गुड्स उठा लो, उसका आपको कोड मिलेगा. सो वेदर यू आर डीलिंग इन एनी गुड्स और सर्विसेज विच इज
अंडर जीएसटी तो उसका साइमल्टेनियसली कोड एक है. Now why is it there? Because it has international recognition, so this code is there, valid all over the world. So things are more sorted now. Okay, so ये इसलिए बता क्योंकि it will get asked in the objectives. Okay, ये unregistered dealer cannot purchase goods from dealers of other states. Now these are all myths or fact. उनमें comparison क्या है? Okay, so just give me 1 minute. मैं तुम लोग को इसका कोड लिस्ट बताता हूँ. Now again, this is not going to be asked in the exam. ये सिर्फ तुम लोग के information के लिए बता के रख रहा हूँ. Now if you see in this, थोड़ा zoom करता हूँ चाहिए तो. Now I am not promoting clear tax. मैंने खुद नहीं खरीदा तो तुम लोग को लेके बोलो मैं खरीदने के लिए. So this is just a website I wanted to show. So यहाँ पर देख लो, GST के वेबसाइट पे भी मिलेगा आप लोगों को ये कोड. So यहाँ पर देख लो, different sections speak about different codes. अभी यहाँ पर देख लो, there is more to this. Okay, देखो, handkerchiefs made out of textile matters. उसमें देख लो, इसका 3 डिजिट का मतलब 6 डिजिट्स का कोड है. So 62 represent the chapter number of apparels. 13, that is next 2 digits, represent heading number for handkerchief. Then last 2 digits, that is 90, represent the product code of handkerchiefs made of other textile materials. अब ये क्या है मेरे को seriously नहीं पता. I am not into textiles, I am not into business, I cannot give you more insight in this. ये चाहिए तो हम लोग बाद में गूगल करके निकाल सकते हैं. Now we come to the topic. जाने तो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा लेक्चर इसमें निकल जाएगा. Okay, these are not important. This is all extra that I had put. Now we come to the main topic. What are the benefits of GST? So different categories. एग्जाम में अगर सिर्फ GST पूछा है, benefits of GST, then in that case we can write anything. We can write for business, we can write for industries, we can write for exporters. कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग. मतलब we need only 7 or 8 points. Or if it is asked for 10 marks, then we need 10 points. So एक एक करके देखते हैं. So what are the benefits for businesses or industries? Firstly, there are low taxes. If taxes are low, cost of the goods come down. Secondly, make in India. अभी ये पता नहीं कितना सही है. So Modi ji introduced make in India concept. It was somewhere before or after GST. I think it was after GST. तो मोदी जी ने बहुत कुछ लॉन्च किया. डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, मेक इन इंडिया लॉन्च किया, मेक फॉर इंडिया लॉन्च किया, मजाक मजाक में बहुत कुछ लॉन्च किया. स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉलिसीज. इंपॉर्टेंट फॉर अस इज मेक इन इंडिया and competitive exports. Now to explain more detailed in this, low taxes क्यों है? Previously there were around 2 taxes minimum that a businessman had to pay. VAT लगता था, octroi लगता था पक्का. If he has a hotel or if he runs a KFC or McDonald's business, then उसको VAT भी लगता था, service tax भी लगता था. Since both of these are removed, now he has to pay only one GST. So taxes are low. बिजनेस वालों के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ. Then it is low cost. So since the taxes are low, they are getting the raw materials or required goods
at lower prices or required services at lower prices, तो उनको पता है कि इसमें कोई झोल नहीं हो सकता, so cost is also reduced. Then make in India concept is there, we discussed it now, and competitive exports. Now rate of GST on exports is 0%. So government wants to increase or encourage exports, so that is why rate of GST has been reduced to 0. If anyone is into export business or wants to get into export business, बहुत सॉर्टेड चीज है, टैक्स भी नहीं है, फॉरेन रेवेन्यू मिलेगा, सिर्फ इंडिया में इनकम टैक्स भरने का तुम लोग, वो भी तुम लोग झोल मार सकते हो कुछ ना कुछ. ओके, सो दिस इज बेनिफिट्स ऑफ बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्टर्स. अच्छा, झोल मार सकते हैं मतलब मेरे को अभी क्लिक हुआ. Some people adjust in the name of incentives. Some people may adjust it internally, maybe show it as scrap or maybe show it as returns. प्रोसेस बहुत सारा है, अभी बाद में उसमें अभी क्लास में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बाद में लफड़ा हो जाएगा, मैं फंसेगा. ओके, सो फिर मेरा नाम किस दिन ट्विटर में आ जाएगा. सो बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर्स, you get it at low rate of tax, obviously you get it at low cost and removes cascading effect. Now obviously what happens here, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई विल जस्ट शो इट वेरी क्विकली. देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, wholesaler, retailer, and then the final consumer. Generally any indirect tax has to be paid by the consumer. ये लोग तो रिकवरी कर रहे और एडजस्ट कर एक दूसरे के साथ. When manufacturer sells to the wholesaler, he paid 100 rupees price of the product plus 10 rupees as tax. So wholesaler को कितना मिल रहा है, 110 में. Now wholesaler sells it to the retailer, so इसने 110 बिल पे बताया as price of the goods plus 10 rupees इसने बताया as tax. तो इसने टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगा. Now wholesaler sells it to the retailer, retailer gets this product for 120. Now what will retailer do, वो क्यों छोड़ेगा अपना. Now retailer sells it to the customer, he charges his own rate of tax. So 12, we have 120 plus 10 rupees. Now the customer gets this for 130 rupees. So since GST is there, all these are removed. Secondly, different states are there, different taxes were involved. Now there's only one nation, one tax. The cost of the goods also comes down. And finally this cascading effect, ये tax के ऊपर जो tax लगते जा रहे, so that is removing cascading effect. Small businesses के लिए क्या फायदा है. So there is a higher threshold limit. Now higher threshold limit का सीन क्या है, पहले अगर मेरे को MVAT में रजिस्टर करना था, so this is sales tax registration within the state या within Maharashtra. तो मेरे को 10,000 taxable purchase or sales and 10 lakhs would be the minimum sales. अगर ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं,
Okay, just give me 1 minute. Okay, sorry, कुछ network issues था. Okay, so what we were discussing is if previous regime में या VAT के time पे 10,000 में और 10 लाख में अगर ये दोनों satisfy होता है, he had to register. If we talk about service tax, 10 lakhs अगर उसने services का cross किया, gross services, he had to pay tax or he had to register. Now in GST, if that person is belonging to a non special category state, आगे सुनेंगे हम लोग special category या non special category, so he has to register only if the sales or the aggregate turnover is 20 lakhs. Almost double हो गया. तो small businesses need not register under GST, but इनका एक ही loss है, they will not get input tax credit. Now the second thing, if they are only into goods, then maximum limit for registration is rupees 40 lakhs. ये भी sorted है. So बहुत सारे businesses का ये फायदा हुआ, because if they are not registered under GST, वो लोग जोल कर सकते हैं, क्योंकि GST इनवॉइस जनरेट नहीं करना है, तो आगे वो लोग किसको भी बेचे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. योर किराना शॉप्स may not be registered under GST. Your dairy stores may not be registered under GST. Your vegetable vendors, obviously वो नहीं आता agricultural produce है करके, but फिर भी they may not be registered under GST. So ये सबसे बड़ा advantage था when GST is concerned. Then you get composition scheme. This was there in VAT, but अलग-अलग rates थे. But it is there in GST and there is a fixed rate, 1% या 5%. Now in GST there is a single registration required. पहले कैसा होता था, I have a business in Mumbai, तो महाराष्ट्र का registration हुआ. I have a business in गुजरात, तो गुजरात का अलग registration में ले सकता था. I have a business in Delhi, Delhi का अलग registration ले सकता था. Now everything comes under a single PAN. So आपका जितना पैन कार्ड है उतना आप registration बता सकते हैं झोल करके. But generally one PAN card has or gives you a single registration only. So GST gives you an ease of doing business, simple and uniform taxes. There is low record keeping cost. Then simple and automated procedures are there. Impersonal tax administration system. तो पहले कैसा होता था, in case of sales tax or service tax, you have to visit the offices, centers and then find out कि कुछ loss हुआ है कि वो लोग फिर self assess करेंगे, मतलब तुम लोग को self assess करने लगाएंगे. They will check it from their end also, visit sales tax office and then personal touch जाता था. But यहाँ पर everything is online, almost everything is online. So there is impersonal tax administration. Then there are some common tax procedures. आगे के chapters में देखेंगे हम लोग. Registration का बोलो, payment के बारे में बोलो, refund के बारे में बोलो. So there are impersonal tax administration and common tax procedures for almost everything. And there is low tax compliance cost. Now economic growth कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, बट इंडिया को बहुत फायदा हुआ as far as GST is concerned. How much has been used, ये क्वेश्चन मार्क है अभी तक, मतलब मैंने उसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं किया. आई विल शो यू द डिटेल्स इन सम टाइम. सो बिकॉज ऑफ GST ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इज देयर, obviously because 0% tax है. Manufacturer has grown, but in the recent years GST के वजह से या नहीं पर वो पता नहीं, but GDP has fallen. Obviously in this COVID time GST will drop.
तो वो अभी आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो छोड़ दो ना। जीएसटी हैज गिवन राइज टू पॉवर्टी रिमूवल, ये पता नहीं कितना ट्रू है, बट टू सम एक्सटेंट मे बी यस, मे बी बोल रहा हूँ, मतलब मैं अभी तक मैं खुद एग्रीड नहीं हूँ जीएसटी ने पॉवर्टी निकाला है करके। ओके, जीएसटी हैज गिवन राइज टू इन्वेस्टमेंट्स, मे बी बिकॉज of number of registrations being less, मतलब less in the sense जिसको register नहीं करना है वो नहीं करेगा, so that could be an investment, they may invest in various businesses. Now most important thing, no tax evasion. So whenever you buy something from a GST registered supplier or vendor, एक tax invoice generate करके देते हो या GST tax invoice, now which means he has paid tax, आप कल बेचोगे तो इसका यूज हो सकता हो। So at any point of time there is no tax evasion that happens, अभी लोग जिसको झोल करना है वो लोग करेंगे, and then there is higher government revenue. Now some of the disadvantages, GST has created a lot of hype about GST software purchase, कि सॉफ्टवेयर रहेगा तो ये काम होगा and all, or else you need a chartered accountant or a professional consultant जिसको GST आता है, so it has increased the cost in all these things. Another disadvantage is you have to be GST compliant, because मेन हेडेक अबाउट जीएसटी, बीच में कभी भी कुछ भी आ जाता है। रिसेंटली इट केम, रजिस्ट्रेशन का लिमिट का चेंजेस हुआ 2 साल पहले, इन द ईयर 2019 दे चेंज द रजिस्ट्रेशन लिमिट, तो यू हैव टू बी कंप्लायंट, दे चेंज सेवरल टैक्स रेट्स इन बिटवीन, अगेन यू हैव टू बी जीएसटी टैक्स कंप्लायंट, सो इसका ये लफड़ा है। then GST will mean an increase in operational cost because you need to have a software, उसका खर्चा, you need to have a full-time employee who handles GST or maybe a part-time employee, या फिर मेरे को कोई CA firm को पकड़ना पड़ेगा जो GST करके दे मेरे को। Now because it is happening on a monthly basis, पहले कैसा था साल में या 6 महीने में एक बार भर दिया हो गया, but now everything is monthly, everything is on track, ऑनलाइन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। GST came into effect in the middle of the year or middle of the financial year. Generally what happens is they pass it in between of the year but implement it or bring it into effect either on 1st April or maybe 31st March, मतलब ईयर एंडिंग या ईयर स्टार्ट में। बट ये जीएसटी का कुछ अलग ही फंडा था, दे इंट्रोड्यूस्ड इट ऑन 1st July 2017, थोड़ा बीच में हो गए। सो जीएसटी came into effect in the middle of the financial year and disrupted a lot of things. लोगों को पता नहीं था करना क्या है। When 2017 GST was introduced, there were a lot of queries, there were a lot of doubts, there were a lot of questions. Some of them obviously were not answered. So they बहुत बड़ा disadvantage था, and there was no time to prepare for this for some of the business people. Then GST is an online taxation system. So पहले offline चल जाता था, now everything has to be scanned and uploaded online. Okay, now we come to the GST Council. Okay, before we start anything, मेरे को सिर्फ एक attendance link share करने दो। Okay, I have shared the attendance. We can start filling our attendance. Okay, now GST Council is the most important development in the entire GST process. क्यों है ये भी बता दो।
So it is a constitutional body. Now GST Council as a question can be asked in the short notes. इसका कोई सम्स नहीं है. So asked in the objectives. ये वाले स्लाइड में से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो भी बता दूं मैं. सो इट इज अ ड्यूअल क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा जा सकते हैं इसके ऊपर. इट कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट नोट्स आल्सो. अभी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एज ऑब्जेक्टिव्स. सो अभी यहाँ पर देख लो. गुड्स एंड सर्विसेज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्यों निकाला है? टू मेक recommendations to different governments, union and state government related to goods and service tax. So what to include, what not to include, what rate of tax should change, should the registration limit change. तो ये सारे जीएसटी का काम है. Now important objective यहाँ पर अभी start होते हैं. It is chaired by Union Finance Minister and other members are Union State Minister of Revenue or Finance and ministers in charge of finance or taxation. तो direct objective, the chairman of GST council is dash. So ये objective हो गया. Then second objective, which article was amended? 279A subsection 1. Okay, now we go ahead. अभी GST council करता क्या? So again, these are the points which are important. So chairperson, Union Finance Minister, vice chairperson to be selected among the ministers of state government. Members कौन कौन है इसमें? All ministers of state for finance, taxation of each state. Okay, then अभी इसमें most important वाला, what is the quorum or minimum attendance for a GST council meeting? So quorum is 50% of the total members. The decision making is 75% majority. And ये last वाला point important है देखो. The weightage of state government in these votings is 2/3 and center is 1/3. So 4 points which are important from the exam point of view. So who is the chairman? So ये important objective point of view sir. Okay, now we'll go ahead. GST council और क्या क्या काम करता है? So all the recommendations with relations to GST are made by the GST council. Now if this is asked in short notes, we have to explain what is GST council. Second, we have to explain some points जो इससे related to the members and quorum. And then we have to explain the recommendations कि क्या क्या recommend करते हैं. So it may recommend the threshold limit or registration limit. क्या क्या taxes include होना चाहिए, क्या क्या taxes नहीं आना चाहिए. What will be the rate of tax? Whether will there be any changes? There are some states in India under GST called as special category states. तो उनको include करना है या नहीं include करना है. अभी पहले देखो, GST Council had included Jammu and Kashmir, but later on they removed it from the special category list. So this is all about GST Council. Now last we will do is e-way bill.
इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है. So in an e-way bill, it is generally required when you are moving goods from one place to another. Transportation या octroi या जब भी कुछ involved रहते तभी. So e-way bill has to be generated only when the value of the goods exceeds rupees 50,000 in a single invoice. Okay, so I think we will stop here. Next lecture में we are going to do GST network and the definitions under GST. तो जितना जल्दी अपना ये टॉपिक्स खत्म होगा उतना जल्दी हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं. So I hope you have filled the